we will solve questions related to two-digit number with the help of linear equations in two variable. So our first question is the sum of two-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digit of number differ by 2, then we have to find out the number. So two-digit number, suppose 25 is two-digit number. If you will write in the expanded form, then we write that 2 into 10 plus 5 into 1. If we know the digits, then we can form the number. The same thing we will use in this question. देखिए यूनिट प्लेस अपने पास पता है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, टेंस प्लेस पता है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा. तो टू डिजिट नंबर है, वी विल एज्यूम हियर unit place and tens place. So let unit place digit is equal to x and tens place digit is equal to y. Then number. So unit place digit multiplied by 1. 1 into x is 1. 1 into x is x. And tens place digit we multiply by 10. So 10y. This will be our number. And it is mentioned in that question on reversing the digits. On reversing the digit means आपका अगर 25 है तो रिवर्स कर देंगे तो 52 हो जाएगा. Unit place become tens place and tens place become unit place. So on reversing the digit, what we get? New number. अब न्यू नंबर में ये टेंस प्लेस हो जाएगा और ये यूनिट प्लेस हो जाएगा. तो टेंस प्लेस 10 से मल्टीप्लाई होगा, यूनिट प्लेस 1 से मल्टीप्लाई होगा. तो दिस विल बी अवर न्यू नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट. Now according to question, it is given that the sum of two-digit number and on reversing the number is 66. The sum of these two number. The first condition is what? Our number and new number. Sum of these two number is 66. So number is x plus 10y. And new number is 10x plus y is equal to 66. So x plus 10x is 11x and 10y plus y is 11y is equal to 66. Divide by 11, you will get x plus y is equal to 6. So this will be first equation. Now the second condition, the digits differ by 2. Digits differ by 2 means difference of digit is 2. So second condition is difference of digits is equal to 2. So x minus y is equal to 2. It may be y minus x is equal to 2. x minus y भी हो सकता है और y minus x भी हो सकता है, लेकिन जब रिवर्स करेंगे तो हमें वही डिजिट्स मिल जाएगी. मतलब कि ये भी हो सकता है और y minus x is equal to 2. So this is second equation and third equation. फर्स्ट और सेकंड से आपको एक नंबर मिल जाएगा, फर्स्ट और थर्ड से आपको अनदर नंबर मिलेगा. तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड हम डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं. फर्स्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सेकंड इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. एड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 by 2 दैट इज 4. और putting x is equal to 4 in first, x is what 4, so it is 4 plus y is equal to 6. 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y is equal to 2. Then number y आपका टेंस प्लेस था, x यूनिट प्लेस था. टेंस प्लेस 2 है, यूनिट प्लेस 4 है, तो नंबर बन जाएगा 24. इन दोनों से सोल्व करें, इनको भी वापस ऐड कर दें फर्स्ट और थर्ड को. तो एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड
First is x plus y is equal to 6. Third is minus x plus y is equal to 2. X cancel, you will get 2y is equal to 8. So y is equal to 4. Now putting y is equal to 4 in equation 1. Equation 1 is x plus y. So x plus 4. X plus 4 is equal to 6. So x is equal to 6 minus 4 is 2. यहाँ पे unit place is 2 and tens place is 4. So the number will be starting of this question will be same. Let unit place digit is equal to x and tens place digit is equal to y. So number will be what? X plus 10y. यूनिट प्लेस x था, y टेंस प्लेस था. इसमें भी रिवर्सिंग द डिजिट का यूज किया, तो हम वो भी नंबर लिख लेते हैं. ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स, इफ यू रिवर्स द डिजिट यू विल गेट न्यू नंबर एंड न्यू नंबर इज व्हाट? इंटरचेंज हो जाएंगे. अब ये टेंस प्लेस हो जाएगा तो 10x प्लस y. फर्स्ट कंडीशन, सी द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन. The sum of digit is 9. Sum of digits is equal to 9. So x plus y is equal to 9. These are the sum of digits. And see the second condition. Also the 9 times this number. Second, 9 times of the number is equal to twice the number obtained by reversing the digit, is 2 into new number. On reversing the digit we get new number. So 9 into x plus 10y is equal to 2 into new number is 10x plus y. So it is 9x, 9 10 ja 90y is equal to 2 10 ja 20x and plus 2y. 20 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 18 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा माइनस 11x, और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 2y, 90 माइनस 2 88y is equal to 0. Divide by 11 you will get minus x plus 8y is equal to 0. This is second equation. Now adding these two using elimination method. Adding 1 and 2. If we add 1 and 2, we are able to eliminate variable x. X plus y is equal to 9 and minus x plus 8y is equal to 0. Cancel, you will get 9y is equal to 9. So y is equal to 1. Now putting y is equal to 1 in equation first. So putting y is equal to 1 in equation first, you will get x plus 1 is equal to 9. So x is equal to 8. So a number will be, hence number will be x. X is unit place and y is tens place. So unit place is 8 and tens place is 1. So that will be what? 18. So that number is 18. जैसा हमने पहले दो क्वेश्चन में किया था, यूनिट प्लेस एज्यूम कर लिया, टेंस प्लेस एज्यूम कर लिया, नंबर और ऑन रिवर्सिंग द डिजिट. हम कंडीशन पे आते हैं. फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? द 2 digit number is 4 times the sum of digit. That number
is equal to 4 times the sum of digits. The number is what? X plus 10y is equal to 4. Sum of digits. Digits are what? X and y. So this is x plus 10y is equal to 4x and 4y. X and this 4x. So what we have? X minus 4x is 3x. 10y minus 4y is 6y is equal to 0. Divide by 3, you will get minus x plus 2y is equal to 0. This is our first condition. Second condition is what? If 8 is added to the number, digits reverse. Means first number means plus 18. If 18 is added to this, you will get new number, means digits reverse. और reverse होने के बाद हमने उसको new number assume किया, new number. So number is what? X plus 10y plus 18 is equal to new number. New number is what? 10x plus y. X minus 10x is 9x. 10y minus y is y. 18 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो इट इज माइनस 9y, sorry. Divide by 9, you will get minus x plus y is equal to minus 2. This will be the second equation. By elimination we will solve. Simply subtract कर देते. Equation 2 minus equation 1. Plus minus minus. Minus x plus x cancel. Minus y is equal to minus 2. So y will be 2. Y is equal to 2. Putting y is equal to 2 in any equation, suppose in second. So putting y is equal to 2 in equation 2. So it is minus x plus y is what? 2 is equal to minus 2. So this will be minus 2 minus 2 minus 4. So minus x is equal to minus 4. X is equal to 4. So unit place is 4 and tens place is 2. So that number will be 24. That will be the answer.